The one of the important reason is, particularly the student from IIT and other students, there is a lot of difference. Because you are doing a lot of research, innovation. And I always telling to the people two important philosophies. One is innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And that is exactly related with you. The other important thing is, no material is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate technology, appropriate leadership, and vision of the leadership that 100% you can get wealth from the West. West to wealth is really another important philosophy. And your relation with the both philosophy is really, I feel that you are the people who can change the socio-economic scenario of the country, because your research, your innovation is going to create great wealth for the country. Not only wealth, but you can make Indian economy number one economy in the world. That type of technology and research is already you are doing. And IIT Mumbai is the leading organization as compared with the other IITs. So I'm really happy to interact with you. First of all, regarding the management, I remember, because when I was entering here, I remember I constructed 55 flyovers in Mumbai. And that one of the flyover was here. And I taken the land from L&T. And that flyover, it was very difficult because the alignment was it coming through the factory of L&T. So I requested the management and giving land to me for that project. So there was a lot of discussion with L&T. Actually, L&T was working with me in Mumbai-Pune Express Highway. So at that time, they gave me the permission. And that's why I see the success story of this flyover here. But one of the things which I feel, that in front of IIT, the construction of metro is going on. And just 1 year before, I appointed a committee under the chairmanship of Ravi Sinha from your IIT. I sent that delegation to Singapore and Malaysia. And actually, on their committee report, we have accepted the policy. And that policy is, it's really a great research. This research is very important for the country because it is going to reduce the cost of the bridges and cost of the metro by 30%. In India, distance between the two piers is maximum up to 30 meters. But in Malaysia, they have successfully experimented the distance between the two piers is up to 120 meters. 120 meters. The reason is they cast the pillar, there is 120 meter distance is there. But the pier, that casting of that, what we call it? Beam with steel fiber. And because of steel fiber, they increase the length. And that is the reason we save the cost. So now we are making this experiment everywhere by reducing the cost by 30%. But actually the research which is supported by IIT and research which is done by Ravi Sinha ji, in front of your IIT, the all traditional system they use for constructing metro here. Something I feel that. It can easily save the cost of crores of rupees. This is the importance of technology. I feel that you are the people who have a lot of good research, good study, and the entrepreneurship is equally important. The most important thing, because you are already, the knowledge is important. I'm not an engineer, but we have 6 world record. And frankly speaking, I'm not an intelligent man. So actually, you are all merit student, because in IIT, without merit, you can't get admission. But my feeling is, knowledge is important,
but at the same time, your inherent abilities, your management expertise is equally important. I remember the one thing that when I was minister in Mumbai in 95-2000, my budget was 1200 crore and total staff with my ministry is come to 36,000 crore. At that time, we formulated new organization as MSRDC. I was the founder of that organization. Still, the organization is working nicely. And we construct 55 flyovers, Worli-Bandra ceiling project, and Mumbai-Pune Express Highway. You just tell me how much number we have at that time as engineers, as officers. In department, we are working, our budget was 1200 crore, the people working more than 32,000. And in MSRDC, we have completed the works more than 10,000 crore. I'm talking about 95-2000. And the total staff was only 49. So this is the difference between the approach of the management. So first of all, the management is very important. We need fast-track decision-making process and positivity in thinking. In the government, majority people are very intelligent, but they are using their all knowledge to convince the minister that how this is not going to happen, how it is difficult. I remember in 97, when I got appointed to meet with Balasaheb Thackeray, he gave me one slogan, and that was written on one acrylic sheet, that I like people who can get the things done. So the most important task is that you need to take fast-track decision-making process, transparency, and corruption-free system. Not taking decision is a big problem. I like people who can get the things done. I like them. Even I like people who can take some wrong decisions, because I always telling to people that you should analyze the thing, whether the mistakes are bona fide or mala fide. If the mistakes are mala fide, forgive them. If the mistakes are bona fide, forgive them. And the mistakes are mala fide, then you can take the action against them. So problem is that no one is perfect and no one can claim that he is perfect. Uttam, Adhik Uttam, Sarvottam up to infinity. You cannot catch your own image. हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो पूर्णांक है, और इसलिए हर समय गलती हो सकती है. If the mistakes are bona fide, forgive them. पर गलती से सुधरना चाहिए. और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैनेजमेंट में हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिविटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए. The most important thing in the management is teamwork. And because for the teamwork, you need human relationship. Respect should not be demanded, it should be commanded. If you deserve for it, you will get it. But sometimes, ego, arrogance, these are the problems which are facing on the higher level of the management. And they discriminate the people. The human relationship is the biggest strength of politics, business, and social work. Everywhere, the human relationship is most important. Without your relationship, you cannot make miracles. And for that human relationship, after if you have good human relationship, then there is a good team. I always telling to people one of the important example which is related with you from mathematics. ए व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. But when A and B comes together, thinks together and works together, the answer is A square plus B square plus twice AB. And this twice AB is a result of collective team spirit. सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा व्यवहार करिए. अहंकार, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में मैं बड़ा हो तुम छोटे हो,
मुझे ज़्यादा समझता है, तुमको नहीं समझता है, ऐसा समझ के नहीं करना चाहिए। जब आप छोटे से छोटे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करोगे, वो आपके लिए बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, तो एक सोलापुर के रेस्ट हाउस में एक खानसामा था। तो बाद में मेरा मंत्री पद चला गया और फिर कभी मैं सोलापुर जाता था, वो डब्बा लेके स्टेशन पे आता था। रात को गाड़ी आती थी सोलापुर से मुंबई, तो जनरली उसी से आता था। तो मैंने उसको एक बार कहा कि भाई तुम क्यों आते हो डब्बा लेके? न मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, न मैं महाराष्ट्र सरकार में भी हूँ अभी, तो तुम क्यों तकलीफ उठाते हो, तुम क्यों लेके आते हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर, आप जब मंत्री थे तो आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरे साथ आपने अच्छा बिहेवियर किया, मैं कभी ज़िंदगी में उसमें भूल नहीं सकता। और वो रिस्पेक्ट के लिए मैं आपके पास लेके आता हूँ और उसके आंखों में आंसू आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल मेरी रोटी और सब्जी खा लोगे तो भी मुझे खुशी होगी, इतना आप केवल करिए। तब मैंने उसको कभी नहीं रोका। अभी भी मैं सोलापुर जाता हूँ, अभी वो रिटायर्ड हो गया है, फिर भी मेरे लिए वो कभी ट्रेन से आता हूँ तो अभी हवाई जहाज में गया तो भी आता था। सो आई ऑलवेज टेलिंग टू द पीपल, मैं तो पब्लिक लीडर हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ा कि जब मुझे मनाही की गई थी यहाँ से मत लड़ो, और अभी मैं चुनाव लड़ा, इस बार 3.5 लाख वोटों से आया हूँ। अगले चुनाव में 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। और मैंने अभी तय किया है कि मैं फोटो नहीं लगाऊंगा, कटआउट नहीं लगाऊंगा, खिलाने पिलाने की बात ही नहीं। अब चुनाव मेरे हिसाब से चलेगा, जिसको देना वोट दे, नहीं देना वो मत दे। मुझे विश्वास है लोग देंगे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जब लोगों में काम करेंगे तो कास्ट, कैश, सब बातें, जो रिलीजन, सब तो ऊपर उठ के लोग तुमको सपोर्ट करते हैं। और इसलिए समवेयर योर लीडरशिप अप्रोच, यू आर ऑल्सो द लीडर, बिजनेस लीडर बनने वाले। अभी बड़े बड़े यूएसए में सीईओ बने, आपके यहाँ से गए हुए लड़के बने। तो स्वाभाविक रूप से मैनेजमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसका संबंध एजुकेशन से नहीं है। एजुकेशन की डिग्री जो होती है वो आदमी को एजुकेटेड बनाती है, सुशिक्षित बनाती है, सुसंस्कृत बनाती नहीं है, सुशिक्षित बनाती है, एजुकेटेड। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इथिक्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. Education is important and ethics more important than education. Value-based education system is the biggest strength of Indian society. और वैल्यूज़ क्या है ये आपको भी पता है। हमारे टीचर के साथ हम कैसे बिहेवियर करें, माता पिता के साथ कैसे बिहेवियर करें, संवेदनशीलता, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमानदारी के मार्ग से चलना, छोटी छोटी बातें हैं जो वे ऑफ लाइफ है। जो आदमी जितना बड़ा होता है, मैं मजाक में कहता, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में तो काफ़ी दोस्त हुए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर तो फिल्म एक्टर, और अभी सब इंटरनेशनल लोग भी मुझे मिले, काफ़ी लोगों से संबंध आया। तो मुझे एक मित्र ने कहा कि आपको क्या महसूस होता है? मैं कभी दिल्ली नहीं जाता था, पहली बार पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बन के पार्टी का दिल्ली गया था। तो दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, मुंबई बहुत बेस्ट है। या आणि अशा चालू घडामोडींचा वेगवान आढावा घेण्यासाठी आमच्या न्यूज मेकर लाईव्हला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.